रजिस्टर। सो 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या होता है? 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। So let us assume we just draw their block diagram. Okay, so it is my 4 bit shift register, serial in, serial out. So it has only one input, let us assume that A. It has only one output, let us assume that E. Okay, and what here? There is a clock, there is a clock, and there is reset. Now what inside it? इसके अंदर क्या है? So what inside in this block is, so there are 4 bit shift registers, so there are the 4 D flip flop. This is my first, second, third, fourth, and it's a synchronous. So all are having the same clock. All are having the same clock. इसका मतलब क्या है? इसका जो डेटा इनपुट से आउटपुट में जाएगा, it will be at a same instant. So that's the clock. So this is my clock. It has a common reset. So all will reset at the same instant. So that is a reset. Okay. There is an input. You can say input A. This is my output E, and there is an intermediate state. There is an intermediate state. That means the output of your first D flip flop, or you can say FF1. So that is of your B. FF2, that the output is C. Okay. FF3, the output is D, and FF4, the output is E. Okay. Now for shift register, serial in, serial out. So very simple. The output of first becomes the input of second. The output of second becomes the input of third. The output of third becomes the input of fourth, and so on. Clear? Okay. अभी D flip flop work कैसे करता है? So if you know that D flip flop. So whenever there is a rising edge of the clock, जब भी rising edge of the clock रहेगा, तो आपका जो इनपुट का डेटा है वो जाएगा आउटपुट में. इसका मतलब क्या है? A का जो डेटा है वो जाएगा B में, जो B का डेटा है वो जाना चाहिए C में, जो C का डेटा है वो जाना है D में, और जो D का डेटा है वो they should be switched to E. Okay. So let assume if let assume here we just draw through that table at rising edge. Okay, so this is my A, that is the input, then B, C, D, and E. These are the outputs of your each flip flop. So let us assume that initially my A is 1. Initially at my A is 1. So at first rising edge, what happened? This all are reset, all the output are reset. So at first rising edge, this A goes to B. A में क्या है मेरा 1, तो 1 कहाँ पे जाना चाहिए? 1 जाना चाहिए B में. So what my B becomes? My B becomes 1. Okay. My A का जो इनपुट है वो जाएगा B में. So what my B becomes 1. B में क्या था? B में क्या था? A शिफ्ट होने के पहले B में क्या था? 0. तो 0 should be shifted to C. Okay. C में क्या था? 0. तो वो कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए? D में. और D का जो आउटपुट है वो कहाँ जाना चाहिए? E के आउटपुट में. Okay. So that becomes 0. Clear? Very simple. Now, what my next bit? Let us assume my next bit is 0. Let us assume my next bit is, what my next bit is? Let us assume that my next bit is 0. Okay. सबसे पहले 1 दिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे A को क्या दे रहा? 0. So what my next bit is? 0. Okay. So at next rising edge, what happened? जो कुछ भी A में है 0, वो कहाँ पे जाना चाहिए? B में. B में क्या था? 1, वो कहाँ पे जाना चाहिए? C में. C में क्या था? 0, वो जाना चाहिए D में. D में क्या था? 0, वो जाना चाहिए E. Okay, at second rising. Let assume my next bit is 1. Next bit of your 1 is A is 1. So at rising edge, what happened? A का जो डेटा है वो जाना चाहिए B में, B का डेटा है C में, C का डेटा है D में, D का डेटा है E में. Clear? Okay. And what happened at last, or what happened at fourth clock pulse? Fourth clock pulse में क्या होना चाहिए? Can anyone tell me? What about fourth clock pulse? Let us assume that my next bit is also 1. Let us assume that my next bit of A is also 1. So A में क्या है? 1. So at fourth clock pulse, what happened? जो A का डेटा है वो जाना चाहिए B में, जो B का डेटा है वो जाना चाहिए C में, C का डेटा जो है 0 वो जाना चाहिए D में, D का जो डेटा था 1 वो जाना चाहिए A में. Now you can check.
फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ओके, सबसे पहले जो आपने ए को 1 प्रोवाइड किया था, उसको बाहर आने के लिए कितने क्लॉक पल्सेस लगे? उसको बाहर आने के लिए कितने क्लॉक पल्सेस लगे? दैट इज अ 4, 1 2 3 एंड 4। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 4 bit shift register. Are you getting this? 4 bit shift register, understand, it needs 4 clock pulses. It needs 4 clock pulses to shift from your input to output. So when you say that 4 bit shift register, so it should have 4 D flip flop. It should have that 4 D flip flop. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Is that clear? Is that clear? Yes or no? Yes. Okay. Now, how we can write their programs? So that's a very important thing and very simple. Okay, it is not that much of difficult. It's a very simple. So let's try to write their program in Verilog. So I can just do it. Okay, I just shrink this block diagram. So let's check it. Okay. So initially, what their block diagram is? Okay, what their block diagram is? So it is simply a 4-bit shift register. So what the name of my model is? Shift underscore reg underscore, you can say 4-bit or 4, no problem. So there is input is A, though it is a 4-bit shift register, but the input is only a single bit. Okay, because we are providing sequentially, the bits are coming here that sequentially. Output, let us assume that output is E. Okay, let assume the clock rising edge. Let us assume this is my reset. So how I can write their program? So let's check. Okay. So how we can write it, this program? So let us assume we start with model. Now let me know what is model name. Model name क्या है इसका? Can anyone tell me? Shweta, what is the model name? Atul, what is the model name? Shift underscore, yes, shift underscore register underscore 4. Okay. Now how many of inputs are there? कितने inputs हैं यहाँ पे? How many inputs are there? Input A. Okay. 3 inputs. What are that? Input A, clock and reset. Input A, clock and reset. Okay. How many of outputs are there? How many outputs are there? Yes, anyone? How many of outputs are there? E. How many of outputs are there? E. If there is a no change on clock, so it should hold my previous output. If there is no change of my clock, that means this clock next rising edge to, okay, this rising edge to next rising edge. If there is no change of my clock, so what here? It should hold the data. So what my output should be? Which data type? Output should be which data type? Yes, anyone? Yes, very correct. Output should be my register data type. Output should be my register data type. Very correct. Okay. Now here we are going to write the programs, the code. So it is sequential design, one by one. Okay, when there is a clock is present, okay, then it will do. Or when there is a reset is here, reset is 1, all should be set as 0. So let assume. Now if you are looking for their internal block diagram, so what internal you can find? Internally you can find there are the 4 D flip flop. Okay. And the output of first becomes the input of second. So you should define the B. Output of second should be defined with, sorry, the output of second should be the input of your third. That means it is connected by C. And the output of third becomes the input of fourth. So that is of your D. So what this C, B, C, D, R. B, C, D, R. Yes, anyone? B, C, D, R. What here you can say? Yes, anyone? Do you find that इसका इंटरनल अगर आपने चेक किया सर्किट, तो इसके अंदर क्या है? 4 फ्लिप फ्लॉप है. 4 फ्लिप फ्लॉप में जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो सेकंड के इनपुट को गया.
सेकेंड का जो फ्लिप आउटपुट है वो थर्ड के इनपुट को गया, थर्ड का जो आउटपुट है वो फोर्थ के इनपुट को गया, एंड फिफ्थ इज नथिंग बट योर फाइनल वायर. Okay, fine, it's a wire, no problems. But if there is a no change, or if there is no rising edge of the clock, if there is no rising edge of the clock, so B should hold its value, C should hold its value, and D should also hold its value. That's why here it should not be wire, it should be registered data type, because your registered data type holds the value. So that's why it is my register, not wire. Though it is of your interconnections, but data type should be of your register, not wire. Why? Why it is not wire? Why it is not wire? Because if there is no rising edge of the clock, it should hold my data. So this B, C and D should hold their previous state if there is no rising edge of the clock. Clear? That's why it's a register. So what the states are there? B, C and D. Is that clear? Yes, anyone? यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes or no? Let me know. Yes, clear. Okay, fine. Thank you. Sayani, thank you. Okay, now here we are writing actual program, the always. अभी आप लोगों को मुझे बताना है कि whether it will be work as a shift register or not. Now this block will execute only at pause edge of the clock. Okay, only at pause edge of the clock. If reset is 1, if reset is 1, so what my A equals to, sorry, A is my input, there is no problem. So if reset equals to, so what my B equals to 0, C equals to 0, D equals to 0 and E is also 0. Okay, अगर मेरा reset 1 है, reset is 1, so all the state should be, ये सभी state क्या होना चाहिए? B, C, D, E are 0. Is that correct? Is it correct? Yes or no? If reset is 1, so all the state should be, yes, anyone? All the state should be 0. Is that correct? Yes or no? Let me know. अगर आपका reset 1 है तो सभी D फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो 0 होना चाहिए. बराबर है या नहीं? Yes, okay, fine. Else, अगर ये 0 नहीं है, if reset is not 0, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? If it is not 0, so what happens? If it is not 0, what happens? So A की वैल्यू कहां पे जाना चाहिए? B में. So what my B equals to A. Is that correct? Then B की जो वैल्यू है वो जाना चाहिए C. So here we are having a multiple statement. So you can start with begin. So जो A की वैल्यू है वो जाएंगी B में, B की जो वैल्यू है वो जाना चाहिए C में, C की जो वैल्यू है वो जाना चाहिए D में. सॉरी, इट्स रॉन्ग. ओके, C में कौन सी वैल्यू आएंगे? दैट इज ऑफ योर B. नाउ जो C है वो जाना चाहिए D में और जो D है वो जाना चाहिए E में. It's end module. The program is over. Now let me know whether it will be work as a shift register or not. अभी आप लोगों को बताना है if you are getting my concepts or if you are getting the basic concepts. So let me know. Okay, अभी आप लोगों को मुझे ये बताना है कि whatever the code we have written, whether it will be acts as an shift register or not. जो हमने यहाँ पे Verilog का कोड लिखा है वो शिफ्ट रजिस्टर के साथ में वर्क करेगा या नहीं? Let me know. Yes, anyone? You can check here the table also. You can verify through the table. हाँ, कितने लोग को लगता है कि ये कोड शिफ्ट रजिस्टर का है और कितने लोग को लगता है कि ये कोड शिफ्ट रजिस्टर का नहीं है? If you understand it, अगर आपको शिफ्ट रजिस्टर अगर समझ में आ रहा होगा, so then and then only you can say that whether my code is shift register or not. क्या हो रहा है यहाँ पे? At rising edge of the clock, A की वैल्यू जा रही B में, B की वैल्यू जा रही C में, C की वैल्यू जा रही D में और D की वैल्यू जा रही E में. तो A की वैल्यू गई B में, B की वैल्यू गई C में, ओके, C की वैल्यू गई D में और D की वैल्यू कहाँ गई? E में. Is that correct?
Is that correct? Yes or no? Yes, anyone? What when reset is 1, then A will also have 0. A तो आपका input है ना, आप input को reset नहीं कर सकते ना. A is my input. A is not output. You can reset only output. Okay, Payal? A is my input. A मेरा क्या है? Input है ना A. So आप input को कैसे बता सकते हैं कि मैंने reset किया आपको 0 होना चाहिए? Input में तो 1 भी रह सकता है 0 भी रह सकता है. Okay, fine. Okay. Yes, anyone? Okay, let me know whether this code will execute as a shift register or not. सिर्फ इतना question. Okay. Who will having the answer? Sir, number of clock mentions करावे लागेल. Cause output will get after 4 clocks. No problems. Already here always, in always block, we have written a pause edge of the clock. That means when the first rising edge of the clock is occurred, then that time this block will execute. Okay. When next time the second rising edge of the clock is occurred, this block will execute second time. When third will come, it will execute 4 times. And when the fourth will comes, it will execute 4 times. So no problems. Every times whenever the clock is coming with rising edge, the block will execute. Because here we have written, यहाँ पे आपने क्या लिखा है? Sensitivity list, and that is of your pause edge of the clock. Yes, let me know. Any answer? Any answer? Whether it will be work as an shift register or not. मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि यहाँ पे जो कोड लिखा है ये शिफ्ट रजिस्टर जैसा बिहेव करेगा या नहीं. आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? अनुराधा, भाविका, दीक्षा, कावेरी, जानवी, किरण, मयूरी, निधि, परिष्कित, प्रांजल, रक्षद. स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट डे. ओके, इसके बाद में शायद हमको पता नहीं कि आगे चल के हम इंटरेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे. ओके, so I think you take the benefits of that, and you will take a benefit only when you respond it. Yes, I think yes. Sakshi, okay. Rakshad is also saying yes. What about remaining? Soham, Utkarsha, Vaishnavi, Tanvi, Sonal. What about you? Mandar. E key range. E key. What here written at? E key range. E key range means. Are you saying about a range of bits? It's a single bit. 4 bits, no sir. No. It's a serial in, serial out. So serial in, serial out का मतलब क्या होता है कि इनपुट से जो कुछ भी मैंने इनपुट पे 1 दिया है, इसको आउटपुट तक जाने के लिए 4 क्लॉक पल्सेस लगेंगे. So it will take a 4 clock pulses to shift my input bit to output. Output is my single bit. Okay, sorry, got it sir. Okay, fine Vandan. Okay, anyone is having the answer? Okay, so shall I explain this? Shall I give the answer? If you are not thinking about the same. Or can you find, क्या आप में से कोई बता सकता है कि whatever the code we have written, it will be work as a shift register. Okay, yes. Okay. Now let me know what type of this blocking statement is, what type of this assignment statement is. जो आपने यहाँ पे लिखा A equals to B, B equals to or C equals to B, D equals to C and E equals to D. ये कौन सा असाइनमेंट स्टेटमेंट है और कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है? नॉट वर्क. शतांश, यस करेक्ट. ओके,
सीक्वेंशियल नहीं, असाइनमेंट, आई एम आस्किंग अबाउट असाइनमेंट. इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू विच असाइनमेंट ऑपरेटर इज ब्लॉकिंग. वेरी करेक्ट. एंड व्हाट हैपन इन ब्लॉकिंग? ब्लॉकिंग में क्या होता है? जस्ट वी हैव सीन हियर व्हाट हैपन इन ब्लॉकिंग. ब्लॉकिंग में क्या होता है? In blocking the statements are execute sequentially. That means before going to assign the value, it should update itself and it will assign updated value. यहाँ पे जो वैल्यू असाइन होने वाली है ये अपडेटेड वैल्यू होगी. सो लेट चेक हियर. यहाँ पे क्या हो रहा, चेक करते हैं हम. ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ए की वैल्यू कहां पे जा रही है? बी में. तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, बी की वैल्यू अपडेट हो गई. जो अपडेटेड बी की वैल्यू रहेंगी वो जाएंगी सी में. सो सी अपडेट हो गया. सी की वैल्यू जाएंगी डी में, डी अपडेट हो गया. और डी की वैल्यू जाएंगी ई में. सो दिस ऑल आर सिक्वेंशियली, these all are executed sequentially. So let assume अभी हमने क्या बोला है कि इनपुट से आउटपुट तक जाने तक उसको कितने क्लॉक पल्स चाहिए? 4. So whether here I am getting a 4 clock pulse or not. So let assume initially my value of a is 1. अभी मेरी a की वैल्यू क्या है? 1. Okay. So after execution of my first statement, let me know what the value of b is. b की वैल्यू क्या होंगी? पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद बी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट द वैल्यू ऑफ बी बिकम्स? व्हाट द वैल्यू ऑफ बी बिकम्स? 1. यस, वेरी करेक्ट. तो व्हाट माय बी बिकम्स? 1. ओके, अभी जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें क्या हो रहा? जो आपकी बी की वैल्यू है वो असाइन हो रही सी को. जो बी की अपडेटेड वैल्यू है वो असाइन हो रही सी को. ओके, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद सी की वैल्यू क्या रहेगी? सी की वैल्यू क्या रहेगी? 1. वेरी करेक्ट. सी की वैल्यू इज ऑल्सो 1 एंड इट ऑक्यूर्स ओनली एट फर्स्ट क्लॉक एज, फर्स्ट राइजिंग एज. ओके, इन फर्स्ट राइजिंग एज इटसेल्फ ए की वैल्यू 1 है, बी की भी वैल्यू 1 होगी और सी की भी वैल्यू 1 होगी. सो अभी जो अपडेटेड वैल्यू है सी की वो कहां पे ट्रांसफर हो रही है? डी में. सो एट third statement execution, after execution of third statement, what the value of d is? What the value of d is? 1. Very correct. And what happened at fourth statement execution? So e में कौन सी वैल्यू जाएंगी? d की अपडेटेड वैल्यू. इसका मतलब e भी क्या हो गया? 1. So यहां पे चेक करो a को, that means when my input a is 1 and ए को ई तक आने के लिए सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स लग रहा. ओके, देयर इज ओनली वन राइजिंग एज. सो इट्स नॉट अ शिफ्ट रजिस्टर. इट्स नॉट अ शिफ्ट रजिस्टर. आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि हमने चेक किया अभी तक इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए मुझे 4 क्लॉक पल्सेस चाहिए. कितने? 4. लेकिन यहां पे क्या हो रहा? एट पॉज एज ऑफ द क्लॉक, if reset is not 1, so a की वैल्यू जाएंगी b में. तो a में क्या है? 1. तो मेरा b अपडेट हो गया. तो अपडेटेड जो b की वैल्यू है वो जाएंगी c में. तो मेरा c अपडेट हो गया. c की वैल्यू गई d में. सो मेरा d अपडेट हो गया और d की वैल्यू गई e में. सो इट इज नॉट शिफ्ट रजिस्टर. इट जस्ट लुक लाइक अ डी फ्लिप फ्लॉप. It just look like a D flip flop. It is not a shift register. It is not shift register. Are you getting this? For shift register program, non-blocking operator is used. Yes, we have to use non-blocking operator. Also, if you are not using that non-blocking operators, then also it can work. Now, how it is? How it is? अभी आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जो D की वैल्यू है वो जाना चाहिए E में. बराबर है? D की वैल्यू कहां पे जाना चाहिए? E में. C की वैल्यू कहां पे जाना चाहिए? D में. B की वैल्यू कहां पे जाना चाहिए? C में. और A की वैल्यू कहां पे जाना चाहिए? B में. So that's why we just change their sequence. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसका सीक्वेंस जो है वो सिर्फ उसको चेंज करते हैं. Let check what happened. यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हो रहा. I just change their sequence. Okay. So सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जो E में है, okay. So that value of D goes in E. Okay. D को मिलेंगी C की वैल्यू, देन C को मिलेंगी B की वैल्यू और B को मिलेंगी A की वैल्यू. अभी चेक करो क्या हो रहा.
Let assume my input A is 1 and assume that initial state of all resistors are 0. Initial states of your all resistors are 0. इसका मतलब D में कौन सी वैल्यू है मेरी 0, C में कौन सी वैल्यू है 0, D में कौन सी वैल्यू है 0 और A में let assume that initially I am providing that A is 1. So ये मेरी initial conditions है. Okay. So अभी सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंड हियर? सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? इफ यू रिवर्स द स्टेटमेंट्स E इक्वल्स टू D, यस वेरी करेक्ट. इसका मतलब जो D की वैल्यू है वो कहां पे जाएंगी, वो कहां पे जाएंगी E में. तो मेरी E की वैल्यू क्या आ गई 0. अभी ये E आप कहीं पे यूज कर रहे क्या, नहीं कर रहे. ओके ओके. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, D इक्वल्स टू C. तो C की वैल्यू है वो कहां पे जाने वाली है, उसके बाद में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद में सेकेंड. सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा कि जो मेरी C की वैल्यू है वो जाएंगी D में. तो मेरा D क्या हो गया, अभी 0 आ गया. करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट क्या है, C इक्वल्स टू B. सो B की जो वैल्यू है वो जाएंगी C में. सो B में कौन सी है 0. सो व्हाट माय C बिकम्स 0. And what my last statement is, what my last statement is, B equals to A, B equals to A. So A की जो वैल्यू है वो जाएंगी B में. So what my B becomes 1. Are you getting this? So do you find that E get a 0? It is not 1. E में 1 आया क्या, नहीं आया, because we change the sequence. We change the sequence. Are you getting this? So be careful when we use blocking assignments, when we use blocking assignment statement. Are you getting this? Yes or no? Let me know. Is that clear? Is that clear? Yes. Okay. Thank you. So just if you just forget their sequence, if you forget their sequence, so just be use. अगर आपका सीक्वेंस कुछ भी हो दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, नॉन ब्लॉकिंग. सो इट बिकम्स योर शिफ्ट रजिस्टर. अगर आपका सीक्वेंस कुछ भी हो चलेगा, इफ इट हैज ब्लॉकिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, इफ इट हैज ब्लॉकिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड पैरेलली. सभी स्टेटमेंट क्या होंगे, पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट. We are using non-blocking assignment statement for sequential design. For sequential design. Are you getting this concept? If you are having a blocking assignment statements, then we have to check about their step by step. And if you are having a non-blocking assignment statement that is a less than equals to, so then there is no